Welcome to my channel, and today we will study the classification of literature. How the literature is classified into different types, which are also called genres. As we know that literature has many categorization and it is classified according to different categories. And these categories are drama, novel, poetry, prose fiction. First of all, we have to be discussed the drama. That what is drama? As we know that drama has been derived from the Greek word meaning action, and it generally comprises chiefly dialogue between characters and usually aims at dramatic theatrical performance. जैसे कि हमें पता है कि ड्रामा उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक जगह भी परफॉर्म किया जाता है, जो कि डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं और उसके लिए एक प्रॉपर जगह जो सेटअप जो है वो चाहिए होता है। और इसको इसको ग्रीक वर्ड्स में इसको ये भी कहा जाता है कि वो ड्रामा लिटरेचर की वो कैटेगरी है जिसमें एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें एक्शन दिया जाता है, as well as conflict and emotions are also expressed through dialogue and action. और हम जानते हैं कि जब एक ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है तो जो करेक्टर्स हैं वो जो इस ड्रामे को परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स को डायलॉग्स के जरिए वो उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. दैट्स वाई ड्रामा इज़ आल्सो कॉल्ड द category of action and the performance of different feelings through the expressions and characterization of the dialogue. Now there is a poetry. That what is poetry? As we all know that poetry is the beautiful representation of the words. Poetry is the language of imagination and the passion, but there is the more requirement of imagination in the poetry, and passion is also important, because when we have the passion to write something, then poetry is written into something beautiful form. A poem is a composition usually written in verse. Poems rely heavily on imagery, precise word choice. पोएम एक ऐसी कॉम्पोजिशन है जो कि यूजली आमतौर पर जो कि वर्स में लिखी जाती है, जो कि स्मॉल लाइन्स में लिखी जाती है. वो वर्स राइम वर्स भी हो सकती हैं, वो ब्लैंक वर्स भी हो सकती है, वो फ्री वर्स भी हो सकती है. जो पोएम्स है वो ज़्यादातर इमेजरी पे रिलाई करती है, बिकॉज व्हेन वी थॉट अबाउट अ इमेज देन वी परस्यू वर्ड्स अबाउट इट. जब भी किसी पोएम को लिखा जाता है, किसी पोइट्री को लिखा जाता है, तो उसके बारे में एक इमेज माइंड में क्रिएट की जाती है. देन उस इमेज को उसको एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, उसको वर्ड्स के रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में उसको लिखा जाता है. देन पोइट्री बिकम्स. दैट्स वाई वर्ड्सवर्थ हैज़ द strong feelings about the poetry. Wordsworth says poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. He says that poetry is the spontaneous power flow of powerful feelings. When we have some sudden feelings, some powerful feelings about a thing, about an emotion, then poetry comes. Then poetry comes in our mind through our feelings into our words. Then comes the essay. 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 When we listen about the essay, we think that it's the description, it's the detail of something. An essay consists of a discussion of a topic from an author's personal point of view. ऐसे किसी भी चीज़ की डिस्कशन, किसी चीज़ की डिटेल, किसी भी टॉपिक की डिटेल को कहा जाता है, जो कि कोई ऑथर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसको लिख रहा है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिटेल है, उसको हम ऐसे कहेंगे. एक सम सडन स्पेशल टॉपिक के बारे में डिटेल देना एक ऐसे कहलाएगा. इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट. इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ राइटिंग लिखना, कुछ भी राइट करना अपने से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, वो ऐसे कहलाएगा. इन एक्स्ट्रा विद इट वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मीडियम. ऐसे एक ऐसे मीडियम को भी कहा जाता है कि जिसके ज़रिए हम अपने आइडियाज़ को, हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपनी थॉट्स को, हम अपनी इंफॉर्मेशन को इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं. नेक्स्ट इज़ द प्रोज फिक्शन. Prose fiction consists of writing that does not adhere to any particular formal structures, non-poetic writing. As we know that prose fiction is the non-poetic writing, the piece of writing that does not have any poetic form, that does not have any verses, is called prose fiction. As well as prose fiction has several forms as novella, short story, and novel. As we all know that novella, short story, and novel are the forms of prose fiction, but philosophy, history, journalism, and legal scientific writings traditionally ranked as also prose. The writings which are included in some
philosophy, which are historically explained, which are having journalism point of view, which are scientific writings. It's all are under the work of prose fiction according to its detail and according to its length. These are all prose fiction. So on conclusion, the prose fiction is the non-poetic writing. So that all was the categorization of literature, and we have studied all the categories of literature: prose, novel, drama, and poetry also. Hope you like it. So like, follow, and do share my videos.